welcome back to the class Physical Chemistry, Basic Principle in Physical Chemistry. आरो दीटा क्लास कंप्लीट हो जाइए। दीटा क्लास रे हमें केमिस्ट्री स्कोप, मैटर एंड एनर्जी, तर क्लासिफिकेशन, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, मेटल एंड नॉन मेटल, मेटालॉइड्स, कंपाउंड्स, मिक्सचर एती सब हमें पढ़ी थिले। आज क्लास रे पढ़ा हो आलोय प्रीवियस क्लास में कहथली। So let's start this session. Alloy होजी कौन? Now when two or more elements are melted together, resulting liquid is allowed to solidify. The product so obtained is called an alloy. Alloy होजी जे दुई बा ततोधिक एलिमेंट तो मेल्ट है कि मेल्ट टुगेदर तो मेल्ट करा हबो एवं जो रिजल्टिंग लिक्विड फॉर्मेशन हबो से ताकू सॉलिडिफाई हवा पई छाडा जीवो। सॉलिडिफाई हवा द्वारा जो नवा प्रोडक्ट फॉर्मेशन हबो सेटा हबो alloy एवं ताकू alloy को हाजिबो केतबेले से इट पोजेसेस मेटालिक प्रॉपर्टी। जेपदन द्वारा मेटालिक प्रॉपर्टी नथिबो ताकू केबे alloy को हाजिबो नै। alloy में कंसिस्ट ऑफ ए mixture of a metal with another metal, a metal with a non-metal or a metal with both metal and non-metal. alloy टा भी हेई पारे से metal सहित metal मिसिक हेई पारे कि metal सहित non-metal सहित मिसिक हेई पारे और metal with both metal एवं non-metal सहित मिसिक हेई पारे। प्रोकॉन alloys are prepared because they have properties. So हमें अर्थ क्रस्ट अछि किछि मेटल अछि एवं किछि नॉन मेटल अछि एवं आउ किछि बोथ मेटल प्रॉपर्टी शो करंती, बोथ मेटल एवं नॉन मेटल प्रॉपर्टी शो करंती। सेगुरा कौन कहला मेटालॉइड कहला। अर्थ रे तो मेटल अछि, नॉन मेटल अछि, मेटालॉइड अछि। तांको द्वारा भी काम होई पथो। तो alloy रे दरकार कोन पई हैला? alloy रे दरकार हैला एथि पई जे for certain application that do the simple metals. alloy are used because they are harder and stronger. alloy काहे कि यूज होय काइना से माने हेले harder एवं stronger, have desirable casting property. से माने करो casting property desirable अछि से special physical properties such as magnetic properties and resistance to corrosion in certain environment. जो प्रॉपर्टी मेटल, नॉन मेटल एवं नॉन मेटालॉइड मान को नथाय से प्रॉपर्टी alloy मान को भी अछि। एई भला सब विशेष गुण अछि बोली alloy को आवश्यक पड़िला। alloy रा गोटे प्रॉपर्टी कौन जे तार रेजिस्टेंस टू corrosion जो corrosion हे जाए जंग लग जाए ता प्रति तार रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी भी अजर थाए। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन alloy is normally lower than the melting point of either the pure component. जेमति कि मेटल मानकर मेल्टिंग एवं बॉइलिंग पॉइंट अधिक थाए किंतु alloy जेमिसे मेटल में जेमिसे कि जो alloy भी हेतिबो ना मेटल नॉन मेटल में से alloy हेतिबो से alloy रो मेल्टिंग पॉइंट either pure components रो lower. आउ किसी तरह प्रॉपर्टी अछि थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आर नॉर्मली रिड्यूस्ड इन alloy. alloy रे कोन होय ना थर्मल एवं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज बहुत कम हे थाए। सो एते सब प्रॉपर्टी थिबारु alloy रो बहुत आवश्यक पड़े। an alloy containing one component mercury is called amalgam. जो alloy रे mercury थिबो ताकू कोन को जीवो ना amalgam को जीवो। most of the metals form amalgam. iron, platinum, tungsten etc. are few metals which do not form amalgam. maximum metal सब amalgam form करंती। mercury सहित मिसिके amalgam form करंती किंतु किछि मेटल अछि जो माने कि amalgam form करंती नै। से सब की हेले ना iron, platinum, tungsten ए तीनटा मेटल जो माने कि alloy form करंती नै। alloy are mainly classified into two distinct types. alloy प्रकार अछि सो कोन namely ferrous and non ferrous alloy. alloy भी दी प्रकार होसी फर्स्ट है ferrous and second है non ferrous alloy. ferrous alloys always contain iron, carbon and one or two of the other elements such as manganese, nickel, chromium, copper, vanadium, molybdenum, tungsten etc. alloy जो दी प्रकार है ferrous alloy एवं non ferrous alloy. ferrous alloy रे निश्चित भाबे iron, carbon थिबो एवं ता सहित अलगा किसी एलिमेंट जेमिति कि manganese, nickel, chromium, copper, vanadium, molybdenum, tungsten ए सब थिबो। जदि when the percentage of carbon in the alloy is below 0.1 जदि से alloy रे कार्बन परसेंटेज 0.1 रो कम हबो तो alloy is termed as iron alloy. से alloy को कोन को हबो ना iron alloy को हबो। if the alloy if the carbon percentage is above 0.1 the alloys are called steel. से alloy को कोन को हबो ना steel को हबो। when iron is not present the alloy it is termed a
नॉन फेरस अलॉय जदि आयरन नथिबो अलॉय रे आयरन कार्बन अलगा सब एलिमेंट सब मु कहली जदि से अलॉय रे आयरन नथिबो ताको कोन कोन कहजिबो ना नॉन फेरस अलॉय कहबो सम द इंपोर्टेंट अलॉयज हैव बीन लिस्टेड बिलो एट सब अलॉय रो नाकर सब चार्ट दिया जायछि फर्स्ट है कोन ब्रास ब्रास माने पित्तल पित्तल रे कंपोजिशन कोन थाए कॉपर 60 to 80% थाए जिंक थिबो 20 to 40% थिबो और मेन यूजेस कोन यूटेंसिल बासन कुसन यूज हबो कंडेंसर ट्यूब इलेक्ट्रिकल गुड्स कैटरी सेल ए सब रे ब्रास यूज हबो सेकंड अछि कोन ब्रोंज ब्रोंज रे कंपोजिशन कोन होछि कॉपर 70 to 5 to 90% होछि एंड टिन 10 to 25% होछि से सब कोड यूज हबो ब्रोंज रे कॉइन्स रे स्टैचूज रे यूटेंसिल रे भी ब्रोंज यूज हुए जेन अछि कोन जर्मन सिल्वर रे कॉपर अछि 56% जिंक 24% निकल 20% से तार यूज कोठी यूटेंसिल रेजिस्टेंस कॉइल रे यूज है कॉन मेटल रे कॉपर अछि 87% टिन अछि 10% एंड जिंक 3% अछि से तार यूज कोठ हुए मशीन पार्ट्स रे एवं गोल्ड रे यूज हुए रोल्ड गोल्ड रे कंपोजिशन कोन कॉपर 95% एंड एल्युमिनियम 5% तार यूज कोठ हुए आर्टिफिशियल ज्वेलरी এই ভଳିଆ ସବୁ ଆଲୟ ମାନଙ୍କର लिस्ट सब दिया जायछि 17 लास्ट कोन स्टेनलेस स्टील आयरन अछि 89.4% क्रोमियम अछि 10% मैंगनीज 0.35% एवं कार्बन अछि 0.25% तो यूज कोठ हुए यूटेंसिल ऑर्नामेंटल पीस रे ए सब लिस्ट दिया है सब आलय मानकर लिस्ट ए आलय मानकर लिस्ट तांकर सब कंपोजिशन कोन कहार के केते परसेंट अछि तार यूज कोन कोन अछि कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू तार सहित बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू रे इंपोर्टेंट पचारते बजे गन मेटल रे तार कंपोजिशन कोन कोन अछि कि तार कोडी यूज होउचे नॉर्मली डे टू डे लाइफ रे हमें स्टेनलेस स्टील यूज करछु तार यूज कोन कि आयरन क्रोमियम एथरे अछि कि नहीं ए भरा सब क्वेश्चन आसी पारे तापर अछि फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस फिजिकल केमिकल चेंजेस कोन मैटर अंडरगोज टू टाइप्स ऑफ चेंजेस मैटर कौन है ना दुई प्रकार चेंजेस अंडरगो करे फर्स्ट होची फिजिकल एंड सेकंड है केमिकल चेंज फिजिकल चेंज इज वन इन व्हिच ए सब्सटेंस चेंजेस इज फिजिकल स्टेट फिजिकल चेंज होची कोन जोथरे की तार फिजिकल स्टेट चेंज हो बट कीप्स इट्स केमिकल आइडेंटिटी तार केमिकल आइडेंटिटी टा सेम रहइबो इन फिजिकल चेंज ए न्यू सब्सटेंस डज नॉट कम इनटू एक्जिस्टेंट फिजिकल चेंज रे गोटे नुवा सब्सटेंस एक्जिस्टेंस को आसेनी mass remains the same physical properties are altered केवल तार फिजिकल प्रॉपर्टीज अल्टर्ड हुए किंतु गोटे नुआ किछि प्रॉपर्टी रे कन्वर्ट हुए नै दिस इज ए टेम्परेचर चेंज एटा होछ कोन टेम्परेचर चेंज तार एग्जांपल कोन देछि द वाटर शोज ऑल ऑफ इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज वेदर इट इज इन द फॉर्म ऑफ आइस और वाटर और स्टीम वाटर और केमिकल प्रॉपर्टी टा सब बेले समान भाबे शो करे से आइस रे थाउ किबा वाटर थाउ किबा स्टीम रे थाउ ice melts to form water and water can be converted again into ice by placing it in a freezer कहीं ना वाटर टा को आइस रे कन्वर्ट हे परिबो त फ्रीज रे रखि देले मु आइस टा फेर अगेन वाटर रे कन्वर्ट हे परिबो सो एटा दर फिजिकल चेंज किछि होउची किंतु तर केमिकल कंपोजिशन किछि चेंज होउनी इन केमिकल चेंज ए न्यू सब्सटेंस और सब्सटेंस came into existence केमिकल चेंज रे कोन होय ना गोटे न्यू सब्सटेंस तैयार हे जाय द स्टार्टिंग मटेरियल को रिएक्टेंट आर यूज्ड ऑफ न्यू सब्सटेंस कॉल्ड प्रोडक्ट गोटे रिएक्टेंट रो गोटे नुआ जो सब्सटेंस फॉर्मेशन हो सेटा हो प्रोडक्ट द कंपोजिशन ऑफ द न्यू सब्सटेंस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द स्टार्टिंग मटेरियल से जो प्रोडक्ट भी फॉर्म हो तार कंपोजिशन टा स्टार्टिंग मटेरियल थारो भिन्न रहे इट इज ए परमानेंट एटा होची एटा भी परमानेंट चेंज फिजिकल चेंज भलिया एटा अल्टर्ड हेबनी एटा होची परमानेंट चेंज इट इज नॉट इजी टू ऑब्टेन द स्टार्टिंग मटेरियल्स अगेन फ्रॉम द प्रोडक्ट एवं ता प्रोडक्ट रो तार स्टार्टिंग मटेरियल जो रिएक्टेंट को जीवाटा भी एते सहज न हो तापर कोन अछि ना एनर्जी से फिजिकल एंड केमिकल चेंज रे कोन चेंज हुए ना एनर्जी चेंज हुए एनर्जी चेंज हुए एनर्जी रिलीज हुए एनर्जी ता से अब्जॉर्ब भी हुए केमिकल फिजिकल चेंज हेले ए सब निचो हुए एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेल्ट आइस एंड एनर्जी रिक्वायर्ड टू बॉयल वाटर conversely the condensation of steam to form liquid water always liberate energy as does the freezing of liquid water to form ice केमिकल चेंजेस आइदर रिलीज एनर्जी हेले तक एक्सॉस्शन को आजिबो एवं अब्जॉर्ब एनर्जी हेले तक एंडोथर्मिक को आजिबो केमिकल चेंजेस हेले तारो
केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हम और से रिएक्टेंट गोटे नुआ प्रोडक्ट नुआ जो सब्सटेंस हम तार सेटा कौन कह प्रोडक्ट कहब यही चेंज रे एनर्जी भी रिलीज हुए और ऑब्जर्व हुए जदि एनर्जी रिलीज हम ताको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहब जदि एनर्जी ऑब्जर्व हम ताको एंडोथर्मिक रिएक्शन एंडोथर्मिक प्रोसेस कहब केमिकल चेंजेस केते प्रकार केमिकल चेंजेस सब हुए so chemical changes are various types the important सब कौन दिया combination कौन two or more substance react to form one product the compound is obtained by the direct reaction between elements it is termed direct union or direct synthesis so combination में कौन हुए दीटा दुई तत्वधिक एलिमेंट मिसिकी गोटे नुआ प्रोडक्ट फॉर्मेशन है डायरेक्ट यूनियन है तापर अछि कोन कॉम्बिनेशन पर डिकम्पोजिशन कोन व्हेन कंपाउंड इज ब्रोकन डाउन इनटू टू और मोर सिंपल कॉन्स्टिट्यूएंट द चेंज इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रे से गोटे कंपाउंड ब्रेक है जीवा ब्रेक है कि तार दुई तत्वधिक सिंपल कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट रे से फॉर्मेशन है जीवा अपॉन हीट इज यूटिलाइज्ड फॉर द डिकम्पोजिशन सच डिकम्पोजिशन इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन प्रोसेस रे भी हीट यूज हुए से जो हीट यूज होतबा डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कह जीवो थर्मल डिकम्पोजिशन कह जीवो तो एग्जांपल कोन 2H2O फॉर्मेशन हला 2Hg + O2 2KClO3 फॉर्मेशन को थराव 2KCl + 3O2 एटा होची तरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन नो एग्जांपल अछि कोन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एग्जांपल कोन when one element enters into compound by the replacement of the other element the change is termed substitution कोन हबो ना गोटे एलिमेंट आ गोटे कंपाउंड रे जबरदस्ती पसी के ता भितरु तारा गोटे एलिमेंट को रिप्लेसमेंट करी के नै आसीबो जेमि तार एग्जांपल होची COSO4 + जिंक फॉर्मेशन हबो कोन कॉपर प्लस NaSO4 जिंक ने कौन कल ये कपर को सब्स्टिट्यूट करके निजे SO4 से तो ऐड है जिंक SO4 जिंक सल्फेट फॉर्मेशन कर दिला C2H6 + Cl2 फॉर्मेशन मन C2H5Cl + HCl de क्लोरीन गोटे हाइड्रोजन को नहीं कि HCl फॉर्मेशन हे वाला से 2 पोटेशियम आयोडाइड + Cl2 फॉर्मेशन हो 2KCl + I2 एटी गोटे क्लोरीन आयोडीन को सब्स्टिट्यूट कर देला करके पोटेशियम से तो मिसी के 2KCl हे गला लास्ट कोन से जिंक + 2HCl give rise to ZnCl2 + H2 देन तापर कोन एडिशन रिएक्शन कोन हो समथिंग इज एडेड टू अ केमिकल सब्सटेंस विदाउट एलिमिनेशन इन्ना जेमि सब्स्टिट्यूशन ने गोटे सब्स्टिट्यूट कर दोथला से किंतु एडिशन रिएक्शन किसी सब्स्टिट्यूट हबनी केवल मिसी जीवे पोटेशियम आयोडाइड + I2 मिसी कोन हबे KI3 C2H4 + HBr मिसी कोन हबे C2H5Br हेबे CH3CHO + HCN मिसी कोन हबे CH3CH एटा कोन गोटे अल्कोहल CN अल्कोहल गोटे फॉर्मेशन हेबे एबले सब एडिशन रिएक्शन केवल जहा सब रिएक्ट थिबे समस्त मिसी के गोटे नुआ प्रोडक्ट फॉर्मेशन हे जिवे एडिशन पर अछि कोन इंटरनल रिएक्शन कोन नथिंग इज एडेड और नथिंग इज एलिमिनेटेड from a chemical substance but due to rearrangement of various atoms present in a molecule. Internal rearrangement रे किसी एडिशन हबनी किसी किंतु किसी सब्स्टिट्यूशन हबनी रिएक्टेंट थिबो ता भीतर से इंटरनली रिअरेंजमेंट है ये नुआ प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा ये भलिया जो रिएक्शन देखिबो तार ना कोन हो इंटरनल रिअरेंजमेंट तार ଗୋଟେ एग्जांपल है NH4 CNO जोटा के फॉर्मेशन है NH2 CO NH2 से दीटा NH4 अछि चारटा हाइड्रोजन अछि एठी नाइट्रोजन से तो दीपड़ दीटा लागि गेलो NH2 CO NH2 फॉर्मेशन हे गेला तो केमिकल चेंज इज टर्म्ड आइसोमरिज्म when one isomer is converted into another so एई भले भी को भी कोन को जाय परबी आइसोमरिज्म भी को जाय परबो तर एग्जांपल कोन H3CH2CH तो नाम हो से N ब्यूटेन LCH3HCl प्रेजेंस रे 2 मिथाइल प्रोपेन रे फॉर्मेशन हो जाए इंटरनली से रिअरेंजमेंट है कि से 2 मिथाइल प्रोपेन भी फॉर्मेशन हो जिवो देन 6th रिएक्शन कोन अछि पॉलीमराइजेशन कोन ना पॉलीमराइजेशन होची 2 or more molecules of a substance combined to form a giant molecule इथि इंटरनल अरेंजमेंट जो रिएक्शन हिला से निज भीतर निज रिअरेंजमेंट है कि नो फॉर्मेशन होतले किंतु पॉलीमराइजेशन रे सेही भलिया जो रिएक्टेंट थिबो ता डिटो ता भलिया अधिक 2 or more molecules मिसी के नुआ मॉलिक्यूल रे नुआ प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जोटा कोटे जायंट मॉलिक्यूल हेतिबो से भले रिएक्शन कोन कहजिवो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन कहजिवो तापर आ गोटे कोन अछि डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कोन होउची एन एक्सचेंज ऑफ पार्टनर्स
occurs between two compounds. Double decomposition रे गोटे जो रिएक्टेंट थिबो ता भितर जने डिकम्पोज हेगी ताको गोटे नुआ नुआ एलिमेंट फॉर्मेशन होतला कि डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन रे कोन होय ना जो दीटा थिबो दीटा रिएक्टेंट थिबो से दीटा रिएक्टेंट तार कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट डिकम्पोज हेगी नुआ नुआ सब फॉर्मेशन करबे प्रोडक्ट फॉर्मेशन करबे जेम गोटे अदर एग्जांपल अछि AB प्लस CD AB प्लस CD AB रे ये डी सहित मिसिकी हबो एडी एवं बी एवं सी सहित ऐड हेकी हबो कोन BCB हबो BSCl2 plus Na2SO4 हला कोन BSO4 plus 2NaCl एना गोटे कोन अछि KOH plus HCl फॉर्मेशन हला कोन KCl plus H2O एटा हला कोन डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन दीटा रिएक्टेंट थिबो से दीटा रिएक्टेंट रे डबल डिकम्पोजिशन हेकी दीटा नुआ नुआ प्रोडक्ट फॉर्मेशन हबो द रिएक्शन इज आल्सो टर्न न्यूट्रलाइजेशन आउ गोटे रिएक्शन कोन अछि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कोन रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस टू फॉर्म ए सॉल्ट एंड वाटर मॉलिक्यूल गोटे एसिड सहित गोटे बेस मिसिकी जेतले रिएक्ट करिवो जो नुआ प्रोडक्ट फॉर्मेशन हबो सेटा कोन सॉल्ट एंड आउ गोटे हबो कोन वाटर मॉलिक्यूल जेतले एई भली एसिड एवं बेस मिसिकी जो रिएक्शन हबो ताको कोन कहजिवो जे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कोन ए जो केओज देजी गोटे केओज हला कोन गोटे बेस हला ये हला केओज कोन गोटे बेस एसिड हला गोटे कोन एसिड सो बेस और एसिड मिसिकी केसीएल हला एवं H2 हला एटा गोटे रिएक्शन कार न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन गोटे एग्जांपल देन आउ गोटे कोन अछि FeCl3 plus 3H2O फॉर्मेशन कोन FeOH3 plus HCl एठी H2O प्रेजेंस रे FeCl3 डिकम्पोजिशन हला ए भले रिएक्शन कोन को आजिवो ना हाइड्रोलिसिस को आजिवो ए भले रिएक्शन की रिएक्शन को आजिवो FeHO3 plus HCl देन अछि कोन डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन पर लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ले केमिकल सब चेंजेस केमिकल रिएक्शन सब कोन कोन अछि एबे तार लॉज ऑफ ए जो कॉम्बिनेशन होची तार सब लॉज कोन दिया है फर्स्ट लॉ कोन अछि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नेम जानि परथो कंजर्वेशन ऑफ मास मींस मास दैट कंजर्वेशन होतो This law was first stated by Lavoisier in 1774. First 1774 रे Lavoisier को द्वारा ये law दिया है it is also known as the law of indestructible of matter. आपको भी कौन कहा जाए ना indestructible of matter. According to this law, in all chemical changes, the total mass of a system remains constant, or in a chemical change, mass is neither created nor destroyed. This law tested by Landolt. All chemical reaction follows this law. Thus, this law is basis of all quantitative work in chemistry. So, law of conservation mass, a law टाकू basis अछि. Chemistry जेते सब quantitative analysis हुए, quantitative reaction हुए, law of conservation mass होता है basis. तो basis ए law of conservation mass रो कौन कहूची ना मास टा सब बड़े कंजर्वेशन रहबो तो टोटल मास ऑफ सिस्टम गोटे सिस्टम रो टोटल मास टा सब बड़े कांस्टेंट रहबो मास टा केबे भी क्रिएट हे परबनी कि डिस्ट्रॉय हे परबनी से सब बड़े कांस्टेंट रहबो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास रे मास टा कोन होची कांस्टेंट रहउची मास इज कांस्टेंट तो एग्जांपल इज 1.70 ग्राम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट dissolved in 100 ग्राम ऑफ वाटर is taken 0.5 gram of sodium chloride dissolved in 100 gram of water is added to it and chemical reaction occur. 1.43 gram of silver chloride and 0.85 gram of sodium nitrate are formed. So question कौन दीजिए AgNO3 थिला sodium silver nitrate थिला 1.70 gram एवं सेतरे 100 gram रो water ऐड करागला देन ता सहित 0.585 ग्राम रो सोडियम क्लोराइड भी 100 ग्राम ऑफ वाटर से वाटर ऐड करागला द्वारा केमिकल रिएक्शन हला केमिकल रिएक्शन हवा द्वारा 1.43 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड एंड 0.85 ग्राम ऑफ सोडियम नाइट्रेट फॉर्मेशन हला सो फॉर्मेशन हला द्वारा एपटा रहला रिएक्टेंट रहले के AgNO3 plus NaCl plus H2O and एपट अछि कोन एटा हला रिएक्टेंट रो अछि एवं ता परे प्रोडक्ट अछि के प्रोडक्ट रो अछि HCl plus NaNO3 सो से माने एटी एक एग्जांपल ले कोन दे अछि जे
ଯେ ସେମାନଙ୍କର ରିଆକ୍ଟାଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ଟୋଟାଲ ମାସ ରହିଲା କେତେ 202.285 ଗ୍ରାମ ତାଙ୍କର ପ୍ରଡକ୍ଟରେ ଟୋଟାଲ ମାସ ରହିଲା କେତେ 202.285 ଗ୍ରାମ। ଆ ଦ୍ୱାରା ଦେଖିଲେ ଯେ ମାସ୍ ଟା ସବୁବେଳେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି, ମାସ୍ ଟା କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ନାହିଁ। ଟୋଟାଲ ମାସ୍ ଅଫ ଦ ସିଷ୍ଟମ ଯୋଉ କହିଲା ଲ ଅଫ କନଜରଭେସନ ମାସ୍ ଟା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ସୋ ଏଠି ମାସ୍ ଟା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଲା। So ଏଥିରେ ଆମେ ସାରାଂଶ କଣ ପାଇଲେ, total mass of reactant is equal to total mass of product. This relationship holds good when the reactant are completely converted into product. So ଏଇ ରିଲେସନ ଟା କେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସାର୍ଥକ ହବ, ଯେତେବେଳେ କି ସମସ୍ତ ରିଆକ୍ଟାଣ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି କନଭର୍ଟ ହେଇଯିବ ପ୍ରଡକ୍ଟରେ। ଯଦି କିଛି ରିଆକ୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଗଲେ କନଭର୍ଟେଡ ହେଲେ ପ୍ରଡକ୍ଟରେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଏଇ ଲ ଟା କଣ ହବ ନା, ସେତେବେଳେ କଣ ହବ total mass of reactant is equal to total mass of product plus masses of unreacted reactant. ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ reactant ର ସମସ୍ତ composition completely ସେ product ର formation ହବନି, ସେତେବେଳେ ତାର ଏଇ ଲ ଟା କଣ ହେଇଯିବ, total mass of reactant is equal to total mass of product plus masses of unreacted reactant. Then ଆସୁଛି କୋଉ law of definite constant of proportion. Law of definite constant proportion. So this law was presented by Prost in 1799 and may be stated as follows. So this law ta kon kohuchi, a chemical compound always contains the same element combined together in a fixed proportion. Chemical compound रे ना kon अछि, se jo same element ku ଯଦି ରହିଥିବ ସେମାନେ ଥିବେ fixed proportion ରେ ସେମାନେ ଥିବେ by mass, ସେମାନଙ୍କର mass ଗୋଟେ fixed proportion ଥିବ। That is, chemical compound has a fixed composition and does not depend on the method of its preparation. So fixed composition ଥିବ ଏବଂ ସେଟା କାହା ଉପରେ depend କରିବନି କାହା ଉପରେ, the method of preparation. So କୋଉ method of preparation ହେଇଛି ତା ଉପରେ ସେ depend କରିବ ନାହିଁ, or the source from which it has been obtained, ଏବଂ ଯୋଉ କୋଉ source ଏବଂ ଏଟା ଆସିଛି ତା ଉପରେ ବି ଏଟା depend କରିବ ନାହିଁ। For example, carbon dioxide can be obtained by using any one of the following. तर एग्जांपल कौन देछि जे कार्बन डाइऑक्साइड ए जो चारिटा देखाई जे तार फॉर्मेशन, ए चारटा फॉर्मेशन रे फॉर्मेशन हे परिबो से कोन बाय हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट को जदि हम हीट करबा CaCO3 को हीट करले भी सेथुर हम कार्बन डाइऑक्साइड पाई परिबा। तापर देछि सोडियम बाइकार्बोनेट को भी जदि हीट करियो भी सेथुर हम कार्बन डाइऑक्साइड पाई परिबा। देन बर्निंग ऑफ कार्बन इन ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन प्रेजेंस रे बर्न करने भी CO2 मिल परिबो। By reacting calcium carbonate with hydrochloric acid, calcium CaCO3 plus HCl भी react करले भी कार्बन डाइऑक्साइड मिलिबो। से चारिटा लेखाई चारिटा प्रोसेस रे कार्बन डाइऑक्साइड मिली परिबो। तामा सो इट हम कोन से जानले जे whenever whatever sample of carbon dioxide is taken, जे कोनसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड जे कोनसी रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड मिलिबो, it is observed that carbon and oxygen are always combined in the ratio 12:32। कार्बन एवं ऑक्सीजन रेशियो कौन रहिबो ना 12:32 सबले रहिबो और 3:8। The converse of this law is that when same elements combine in the same proportion, same compound will be found is not always true. से कोन कहले जे एई law of definite constant proportion कोन कहला से जे कोनसी उपाय रे से फॉर्मेशन हो गोटे कंपाउंड सेतरे तार proportion ता सबले कांस्टेंट रहबो, किंतु आर ड्रॉबैक होची जे कोन ना सबुबले proportion ता कांस्टेंट रहियो बोली किछि सेमिति माने नाही कि सेटा यूनिवर्सल ट्रुथ न हो। तो ताबे देखियो कोन कहूची, फॉर एग्जांपल तार एग्जांपल टा कोन देला ना कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन व्हेन कंबाइन इन द रेशियो ऑफ 12:3:8। जेतले कार्बन हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन 12:3:8 रेशियो रे से माने ऐड हेबे बा रिएक्ट करिवे, से माने कोन फॉर्म करिवे ना इथाइल अल्कोहल, आइदर इथाइल अल्कोहल फॉर्म करि परंती और डाइमिथाइल ईथर फॉर्म करि परंती ऑन डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। से इथाइल अल्कोहल भी फॉर्मेशन करि परंती, डाइमिथाइल अल्कोहल फॉर्मेशन करंती। तांगर जो एक्सपेरिमेंटल कंडीशन या जीवो ता से ताबे डिपेंड करिवो जे से कोन फॉर्मेशन करिवो। किंतु सेतिरे तार ए जो दुईटार कोन हो जाउची ना फार्मूला चेंज अलग अलग हो जाउची, फार्मूला अलग अलग हेयने सेमानकर कांस्टेंट रहिबनी, एना से सेम एलिमेंट सेम कंपाउंड रहिबनी। सो यार ए जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ना एटा होतर ड्रॉबैक जे से माने कांस्टेंट प्रोपोर्शन रहियो बोली किसी सेमिति ग्यारंटी नाही। तापर कोन अछि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कोन कहला, दिस लॉ वाज पुट फॉरवर्ड बाय डाल्टन इन 1898। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ता का द्वारा दिया अछि, डाल्टन द्वारा दिया अछि 1808 मसिया। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ टू एलिमेंट्स
combine to form more than one compound যদি দুইটা এলিমেন্ট কম্বাইন ହେଇକି ফর্মেশন କରିବେ ଗୋଟେ ନୂଆ compound formation କରିବେ then the different masses of one element which combine with a fixed mass of the other element bear a simple ratio to one another so କଣ ହବ ନା ଯାହାର ଡିଫରେଣ୍ଟ ମାସ୍ ଥିବ ଯଦି ଦୁଇଟା ଏଲିମେଣ୍ଟ ମିଶିକି କମ୍ବାଇନ ହେଇକି ଗୋଟେ ନୂଆ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଫର୍ମେସନ କରିବେ ଯୋଉ ଏଲିମେଣ୍ଟ different element the different masses of one element which combine with a fixed mass of other element ଯୋଉ ଯାହାର डिफरेंट मास अच्छी जार फिक्ड मास सहित जो एलिमेंट अच्छी जो कम्बाइन कर बियर सिंपल रेशियो टू वन अदर से सहित गोटे सिंपल गोटे रेशियो से प्रोपोर्शन रहा कौन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कम्बाइन टू फॉर्म टू कंपाउंड्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिसिक गोटे कंपाउंड करेंगे कौन H2O भी करेंगे H2O2 फॉर्मेशन भी करेंगे एक्सपेरिमेंटल कंडीशन को डिपेंड करे जे कौन फॉर्मेशन हम H2O हो ना H2O2 हो H2O और H2O2 कौन देखा इन वाटर हाइड्रोजन रखे टू पार्ट H2O रे हाइड्रोजन अच्छी दुईटा अच्छी H2O2 रे हाइड्रोजन ये दुईटा अच्छी ऑक्सीजन गोटे अच्छी किंतु ऑक्सीजन दुईटा अच्छी या देखा ऑक्सीजन गोटे हम 16 पार्ट्स ऑक्सीजन 32 पार्ट्स हो the masses of oxygen which combine with the same mass of hydrogen in these compounds bear a simple ratio 1:2 एमान सहित रेशियो होची कोन 16:2 32 रो रेशियो होची कते 1:2 एमान को सब गोटे सिंपल रेशियो होची लेकिन सेमिति किछि कम जी रेशियो नै 1:1.3334 एमिति किछि रेशियो होबनी अंकर सब सिंपल रेशियो हो बुझिला तापरे आउट एग्जांपल कोन देछि the masses of oxygen which combine with the same mass of hydrogen in these two compounds bear a simple ratio 1:2 तापर देछि आउट एग्जांपल नाइट्रोजन एग्जांपल कोन देछि नाइट्रोजन एठी N2 N2O2 N2O3 N2O4 नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड N2O3 एबला सब नाइट्रोजन रो ऑक्सीजन रो एबला सब अलग सब कंपाउंड देछि एठी नाइट्रोजन 28 पार्ट अछि सब नाइट्रोजन केते अछि 28 पार्ट अछि जो ऑक्सीजन रो चेंज अछि ऑक्सीजन अछि 16 पार्ट सेकंड N2O2 रे ऑक्सीजन अछि 32 पार्ट N2O3 रे ऑक्सीजन अछि केते 48 पार्ट एवं N2O4 रे ऑक्सीजन अछि 64 पार्ट्स एंड N2O5 रे ऑक्सीजन अछि 80 पार्ट्स एठी देखावला जे ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन टा कोन कांस्टेंट रहला ऑक्सीजन एठी डिफरेंट मास रहिले भी से माने भीतर रेशियो कोन सब सिंपल होछ 1:2:3:4:5 देन हेला लॉ ऑफ एटा होछ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन से माने को रेशियो टा सब सिंपल रहइबो सब रेशियो किसी कम जी रहइबोनी तापर लॉ कोन अछि लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन कोन दिस लॉ वाज गिवन बाय रिक्टर इन 1794 ए लॉटा का द्वारा दिया हैतिला रिक्टर को द्वारा दिया हैतिला दिस लॉ स्टेट्स दैट व्हेन डिफरेंट मास ऑफ ऑल एलिमेंट ए कंबाइंस विथ अदर टू एलिमेंट ए कंबाइन करिवो का सहित ए एठी कंबाइन करिवो का सहित बी एवं सी सहित कंबाइन करिवो ए कंबाइंस विथ अदर एलिमेंट्स बी एंड सी टू फॉर्म टू कंपाउंड्स ए और बी सहित मिसी कौन फॉर्मेशन हबो ए बी हबो एठी एवं सी सहित मिसी कौन फॉर्मेशन हबो सी फॉर्मेशन हबो फॉर्म two compounds and if B and C also combine to form two compounds if B and C मिसिकी formation हेले कोन BC हेले form a compound their combining masses are in same proportion or bear a simple ratio to the mass of B and C से मानकर रेशियो टा AB एवं A सहित रेशियो किबा AB एवं B सहित रेशियो टा सब सिंपल रहबो और bear a simple ratio to the masses of B and C which combine with a constant mass of A जो BC formation है ना तारो B and C सहित रेशियो टा सब सिंपल रहबो एमि पूर्व लॉ रे भी कहली सिंपल रेशियो रहबो एथिरे भी आको भितर से जहा भी करंती ताकर सब रेशियो टा सिंपल ही रहबो जण हेला ठी एग्जांपल करे छी ए रे जे हाइड्रोजन बी अछि सोडियम सी अछि क्लोरीन हाइड्रोजन और क्लोरीन सहित मिसी के सीरेट फॉर्मेशन कले एठे हाइड्रोजन एवं सोडियम सहित मिसी के सोडियम हाइड्रेट फॉर्मेशन कले फिर बी एंड सी मिसी के NaCl फॉर्मेशन कले एठी देखो इन सोडियम हाइड्रेट रे A and B में B रे अछि के सोडियम हाइड्रेट सोडियम अछि 23 पार्ट्स इन HCl अछि 30.5 पार्ट्स in that hydrogen is one part second hydrogen also one part sodium and chloride also combine to form NaCl in which 23 parts of sodium and 35 parts of chlorine are present these are the same parts which combine with one part of hydrogen in sodium hydride and HCl respectively माने हाइड्रोजन सहित one part रे से माने combine है कि फॉर्मेशन कले जोटा कि ताकर को प्रोपोर्शन कोन सब सिंपल होछ एठी आउट एग्जांपल है हाइड्रोजन सहित बी अछि सल्फर सी रे अछि ऑक्सीजन हाइड्रोजन टा सल्फर सहित मिसी के H2S फॉर्मेशन कले हाइड्रोजन टा ऑक्सीजन सहित मिसी के H2O फॉर्मेशन कले इन H2S स्टेज रे हाइड्रोजन अछि 2 पार्ट्स इन H2O2 रे हाइड्रोजन अछि 2 पार्ट्स ए सल्फर अछि 32 पार्ट्स एंड ऑक्सीजन अछि 16 पार्ट्स then thus according to this law sulfur should combine with oxygen in the ratio of 32:16 एठी सल्फर टा
ऑक्सीजन सहित को रेशियो रे ରହିଲା 32:60 simple multiple of it actually both combine to form SO2 in the ratio 32:32 जोटा कि 1:1 ସେମାନେ ଯାହା ସହିତ କମ୍ବାଇନ୍ କରନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ରେସିଓଟା କ'ଣ ରହିବ ସିମ୍ପଲ ରହିବ in all chemical reaction substance always react in the ratio of their equivalent mass so ଏଥିରୁ କ'ଣ ଦେଖାଗଲା ଯେ ସେ जो सब्सटेंस रिएक्ट करूची से कोई रेशियो रहबे रेशियो ऑफ द इक्विवेलेंट सेमानकर इक्विवेलेंट मास रो रेशियो रे प्रत्येक केमिकल रिएक्शन रे सेमाने इक्विवेलेंट मास रेशियो रे सेमाने रहिबे ऑफ रेशियो का प्रोपोर्शन सच्ची लास्ट अछि लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम सो ई क्लास रा जे एतिक रे कंप्लीट करदबा नेक्स्ट क्लास रे लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम को हम स्टार्ट करिबा वीडियो को संपूर्ण भाव देखंतु एवं हम सहित जोड़िया कि रहंतु भल सो वीडियो भल लागिले लाइक एवं शेयर करंतु धन्यवाद।